Iranian and Macedonian invasion. Iranian invasion in northeast India, the smaller principalities and republic gradually merged with the Magd Empire. But the northwest India presented a different picture. In the first half of the 6th century BC, the several small principalities, such as those of the Kamboj, Gandhara, and Madras, fought one another. This area did not have any powerful kingdom like, like that Magda to weld the varying communities into one organized kingdom. The area was also wealthy and could be easily entered through the passage in the Hindu Kush. The Achaemenians, ruler of Iran, who expanded their empire at the same time as the Magad prince, took advantage of the political disunity on the northwest frontier. The Achaemenid ruler of Iran, who expanded their empire at the same time as the Magad princes, took advantage of the political disunity on the northwest frontier. The Iranian ruler, the Darius, penetrated into northwest India in 516 BC and annexed Punjab west of the Indus and Sindh. The Darius annexed the Punjab west of the Indus and Sindh. The Darius, the ruler of Iran, this area constituted the 20th province of Strapi of Iran. The total number of the strapes in the Iran Empire being 28. The Indian Strapi included Sindh, the northwest frontier, and the part of the Punjab that lay to the west of the Indus. It was the most fertile and populous part of the empire. It paid a tribute of 360 talents of gold, which accounted of 1/3 of the total revenue of Iran. The region of the Punjab and the west of the Indus that constituted 1/3 of the total revenue of Iran. यानी ये इलाका ही सिर्फ 1/3, 1/3 रेवेन्यू देता था ईरान को from its Asian provinces. The Indian subjects were also enrolled in the Iranian army. The Xerxes, the successor of the Darius, employed Indians in the long war against Greeks. It appears that India continued to be part of the Iranian Empire till Alexander's invasion of India. Now we talk about the result of the contacts. The Indo-Iranian contact lasted for about 200 years. It gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce. The cultural results were more important. The Indian scribe brought into India a form of writing which came to be known as the Kharosthi script. It was written from right to left like the Arabic. The Iranian scribe brought into India a form of writing which came to be known as the Kharosthi script. तो ये खरोष्टी लिपि है वो ईरान की तरफ से आई है भारत में, ठीक है, जो कि अरबी की तरह ही ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है।
It was written right to left. The Arabic is like the Arabic. Some Ashokan inscriptions in the northwest India were written in the 3rd century BC in this script, which continued to be used in the country till the 3rd century AD. Iranian coins are also found in northwest frontier regions, which points to the existence of trade with Iran. But it is wrong to think that the punch-marked coins came into use in India as a result of contact with Iran. However, Iranian influence on Maurya sculpture is clearly perceptible. The monuments of the Ashoka time, especially the bell-shaped capital, owed something to the Iranian model. Now we talk about the Iranian influence in India. The Achaemenid Empire, Strapi and Talent. Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka's edict as well as the certain terms used in them. For instance, for the Iranian term DP, the Ashokan scribe used the term Lipi. Further, it seems that through the Iranian, the Greeks came to know about the great wealth of India. तो ग्रीक लोगों को इरानियंस के थ्रू ही पता चला इंडिया की संपदा के बारे में, यहाँ की वेल्थ के बारे में, द वेल्थ ऑफ इंडिया के बारे में, महान सभ्यता, which wanted that greed and eventually led to Alexander's invasion of India. Now we talk about Alexander's invasion. In the 4th century BC, the Greeks and the Iranians fought for the supremacy of the world. Under the leadership of Alexander of Macedonia, the Greeks finally destroyed the Iranian Empire. Alexander conquered not only the Asia Minor and Iraq, but also Alexander conquered not only Asia Minor and Iraq, but also Iran. From Iran, he marched to India, obviously attracted by its great wealth. The Herodotus, who is called father of history, and other Greek writers had painted India as a fabulous land, which tempted Alexander to invade it. Alexander also possessed a strong passion for geographical inquiry and natural history. He had heard that the Caspian Sea continued on the eastern side of India. He had heard that the Caspian Sea continued. The Caspian Sea. He heard that the Caspian Sea continued on the eastern side of India. मतलब उसने ऐसा सुन रखा था कि ये जो कैस्पियन सी है उसके ईस्टर्न साइड से इंडिया शुरू हो जाता है. कैन वी इमेजिन? बिल्कुल होता ही है, क्योंकि वहाँ तक तो जो ये मिले हैं अवशेष मिले हमें हैं, बुद्धिज़्म के अवशेष मिले वहाँ तक हैं, वहाँ तक हमें मिले बौद्ध स्तूप मिले हैं. कहाँ तक? कैस्पियन सी के ईस्टर्न साइड तक तो मिले हैं. तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उसकी बात एकदम सही थी, क्योंकि कैस्पियन सी के ईस्टर्न साइड में जो है ना ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक तो था. उसके बाद वहाँ था अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था. बस तो वो तो जो ये अफगानिस्तान है वो तो बहुत बाद अभी तक था, पीछे तक भारत का हिस्सा था. आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि उसके बारे में he had heard that the Caspian Sea continued on the eastern side of India. He was also inspired by the mythical exploits of past conquerors
whom he wanted to emulate, and surpass. Small kingdom of northwest. The political condition of northwest India suited his plans. The area was parceled out into many independent monarchies and tribal republics, which were strongly wedded to the soil and had a fierce love of the principality over which they ruled. Alexander found it easy to conquer. Alexander found it easy to conquer these principalities one by one. Among the rulers of these territories, two were well known. तो दो लोगों को सभी लोग जानते हैं, और वो दो लोग कौन कौन से थे? अम्बी और पोरस। अम्बी कहाँ का राजा था? अम्बी तो राजा था, अरे यार ये तो रह गया। अम्बी तक्षशिला का राजा था, और पोरस जो कि झेलम और चेनाब के बीच का इलाका था, वहाँ का राजा था पोरस। तो अम्बी the prince of Takshila, and Porus, whose kingdom lay between the Jhelum and Chenab. Together they might have effectively resisted the advance of Alexander, but they could not put up a joint front. The Khyber Pass remained unguarded. वो दोनों अम्बी और पोरस दोनों मिलकर सिकंदर को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी दोनों ने मिलकर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया अलेक्जेंडर के खिलाफ। और खैबर पास जो कि वो भी अनगार्डेड था। आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18। इसमें लिखा है कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ईरान, अलेक्जेंडर मूव्ड टू काबुल, फ्रॉम वेयर ही मार्च्ड टू इंडिया थ्रू खैबर पास इन 326 BC. It took him 5 months to reach the Indus. और उसे खैबर पास से इंडस नदी तक पहुंचने में करीब 5 महीने लगे। Ambi, the ruler of Takshila, readily submitted to the invader, augmented his army and replenished his treasure. जो अम्बी था, जो तक्षशिला का राजा था, उसने रेडिली उसने सबमिट कर दिया, उसने समर्पण कर दिया किसके सामने? उसके सामने, सिकंदर के सामने। और उसने समर्पण करते हुए उसने अपने समाज जो खजाना था उसको भी सिकंदर को सौंप दिया। और उसके साथ में उसने दिखाएंगे उसने आर्मी भी उसको सौंप दी। When he reached the Jhelum, the Alexander met from Porus the first and the strongest resistance. और यही सबसे पहला और सबसे strongest resistance था। Although Alexander defeated Porus, he was impressed by the bravery and courage of the Indian prince, so he restored his kingdom to him and made him his ally. उसने अपना सहयोगी बना लिया, उसको वापिस उसकी राज्य और उसके जमीन और संपदा को सौंप कर, हारने के बावजूद पोरस को सब कुछ मिल गया। Then he advanced as far as व्यास रिवर, और उसके बाद वो व्यास रिवर की ओर बढ़ा। He wanted to move still further eastward, but his army refused to accompany him. The Greek soldier had grown war-weary and diseases. The hot climate of India and 10 years of continued camping had made them terribly homesick. They had also experienced a test of Indian fighting qualities on the banks of the Indus, which made them dazed from the further progress. As the Greek historian Arian tells us, in the art of war, Indians were far superior to the other nations inhabiting the area at that time. Especially the Greek soldiers were told to a formidable power on the Ganga. Obviously, it was the kingdom of Magadha ruler by the Nanda, who maintained an army for
outnumbering that the Alexander. So despite the repeated appeals of the Alexander to advance, the Greek soldier did not stop, did not budge an inch. वो एक भी इंच आगे नहीं जाना चाहते थे और इस तरीके से ग्रीक एडवांस है वो स्टॉप हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। Alexander lamented, I am trying to rouse the heart that the disloyal and crushed with the craven fear. The king, who had never known defeat at the hand of his enemies, had to accept defeat from his own pen. He was forced to retreat, and his dream of an Eastern Empire remained unfulfilled. On his return march, Alexander vanquished many small republics until he reached the end of the Indian frontier. He remained in India for 19 months, 326 to 325 BC, which were full of fighting. He had barely any time to organize his conquest. Still he made some arrangements. Some conquered states were restored to their rulers, who submitted to his authority, but his own territorial possessions were divided into three parts, which were placed under three Greek governors. He also founded a number of cities to maintain his power in this area. Now we talk about the effects of Alexander's invasion. Alexander's invasion provided the first occasion when the ancient Europe came into close contact with ancient India. It produced important results. The Indian campaign of Alexander was a triumphant success. He added to his empire an Indian province which was much larger than that conquered by Iran. Though the Greek possessions in India were soon lost to the Maurya rulers, the most important outcome of this invasion was establishment of Greek contact between India and Greek in different fields. Alexander's campaign opened up 4 distinct routes by land and sea. It paved the way for Greek merchants and craftsmen. The most important outcome of the invasion, the establishment of the direct contact between India and Greece in different fields. Alexander's campaign opened up 4 distinct routes by land and sea. It paved the way for Greek merchants and craftsmen and increased the existing facilities for trade. Although we hear of some Greeks living on the northwest even before the invasion of Alexander, the invasion led to establishment of more Greek settlement in this area. The most important of them were the city of Alexandria in the Kabul region, the Bokifala in the Jhelum, and the Alexandria in Sindh. तो झेलम नदी पर ये बोकीफाला इस नाम का एक शहर है ना, वो क्या है, झेलम पर बसाता है, और अलेक्जेंड्रिया नाम का एक सिंध में, और इसके साथ में एक नाम और लिखा गया है यहाँ पर कि अलेक्जेंड्रिया, द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन द काबुल रीजन। तो काबुल रीजन में भी एक अलेक्जेंड्रिया नाम की एक सिटी की स्थापना भी करता है।
These areas were conquered by the Mauryas. The Greeks continued to live under the both Chandragupta Maurya and Ashoka. Alexander was deeply interested in the geography of the mysterious ocean, which he saw for the first time at the mouth of Indus. Therefore, he dispatched his new fleet under his friend, the Nicus, to explore the coast and search for harbor from the mouth of the Indus to that of the Euphrates. Indus to that the Euphrates. So Alexander's historians have left valuable geographical accounts. They also have left clearly dated record of Alexander's campaign, which enable us to build Indian chronology for subsequent events on the definite basis. Alexander's historians also give us important information about the social and economic conditions. They tell us about the sati system, the sale of girls in marketplaces by poor parents, and the fine breed of auction in the southwest India. Alexander sent from their two-leg auction to Macedonia for use in Greece. The art of the carpentry was the most flourishing craft in India, and the carpenters built chariots, boats and ships. तो वो करीब 2 लाख बैलों को मैसिडोनिया ले जाता है, लेकिन क्यों? सवाल तो यही खड़ा होता है कि उसे ज़रूरत क्या थी 2 लाख बैलों को ले जाने की? ज़रूरत इसलिए थी, ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो यूरोप के अंदर बैल थे उनकी क्या नहीं थी, कुबड़ नहीं थी। उसकी वजह से क्या है कि हल जोतना मुश्किल था, और हल जोतने के लिए वो लोग जैसे गुलामों का यूज करते थे। इसलिए वहाँ पर जो गुलामी की प्रथा थी, स्लेव सिस्टम था, वो भारत में जो स्लेव थे उनकी अपेक्षा बहुत ही खराब था। वहाँ का यहाँ के स्लेव, भारत के स्लेव इसमें थोड़ी अच्छी हालत में थे, वहाँ के स्लेव बड़ी खराब हालत में थे। अब ये 2,000 बैलों को यहाँ से लेके जाएगा तो उससे क्रॉस ब्रीड या उन्हीं बैलों से, गायों से और भी आगे चलेगी, नए बछड़े पैदा होंगे, तो उससे वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? द आर्ट ऑफ द कारपेंट्री वाज द मोस्ट फ्लोरिशिंग क्राफ्ट इन इंडिया, एंड द कारपेंटर्स बिल्ट chariot, boats and ships by destroying the power of the petty states in northwest India. Alexander's invasion paved the way for expansion of Maurya Empire in that area. According to tradition, Chandragupta Maurya, who founded the Maurya Empire, had seen something of the working of the military machine of Alexander and had acquired some knowledge which helped him in destroying the power of the Nandas. तो इस प्रकार से ये सब समाप्त होता है। कुछ एक्सरसाइज देखी है, इसमें लिखा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेपी एंड डीपी, लिपी एंड टैलेंट। आगे लिखा गया है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इरानियन इन्वेजन ऑन इंडिया, गिव एन अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, व्हाट वर इट्स इफेक्ट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ यूरेशिया, शो द एक्सटेंट ऑफ Achaemenian Empire at the greatest extent on an outline map of Eurasia, show the empire of Alexander and the map of the kingdoms, countries, rivers and places mentioned in the text. The record of the Alexander's campaign enable us to build Indian chronology for subsequent events on the definite basis.
explain the statement and discuss why it is torn, why it is true. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसमें पता चला कि सिकंदर से पहले ईरानियंस इंडिया पहुंच चुके थे, तो ये बात हमें इससे पता चली। और बाकी और भी कई चीज़ें पता चली, जिनमें से एक बात ये थी कि सिकंदर और उसकी सेना को पहले ये लगता था कि जो कैस्पियन सी है उसके ईस्ट साइड से ही इंडिया शुरू हो सकता है। एक बात ये पता चलती है। एक ये कि जो सिकंदर था उसकी वो अपनी सेना के साथ में भारत में करीब 19 महीने रहा था। कितने महीने? 19 महीने रहा था। और वो कहाँ रहा था, ये देखो सोचने वाली बात तो ये है। कहते हैं कि वो एक लंबे टाइम तक रहता है झेलम और चेनाब नदी के बीच के इलाके में, और उसके बाद में वो कुछ शहरों का निर्माण भी करता है भारत में। और वो शहर कुछ इस प्रकार से थे कि वो जैसे काबुल के अंदर अलेक्जेंड्रिया नाम की शहर की स्थापना करता है, और ये झेलम के किनारे वो बोकोफाला नाम के शहर की स्थापना, और सिंध के अंदर भी अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर की स्थापना करता है। कहते हैं कि ये जो सिंध के अंदर अलेक्जेंड्रिया था उसका नाम आने वाले टाइम में बदला और उसका नाम हो गया उच्च शरीफ। अब बात ये आती है कि जब वो जहाँ पर रहा लंबे टाइम तक, वो एक बड़ी सेना के साथ में वो एक यहाँ पर लंबे टाइम तक रहा, तो ज़रूर ये कल्चरल एसिमिलेशन हुआ और एक हुआ आदान प्रदान हुआ जेनेटिक वैल्यूज़ का, जीन का आदान प्रदान हुआ, आनुवंशिकता का यहाँ के लोगों के साथ में। इस प्रकार से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया में रहने वाले काफ़ी लोगों के अंदर जो ग्रीस के लोगों की जीन भी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसी चैप्टर में हमें एक जगह ये भी पता चला कि जो खरोष्टी लिपि है वो ईरान से भारत पहुंची है। वो किस प्रकार से पहुंची है ईरान? कि जब डेरियस ने भारत के इलाकों को जीता था, और वो इलाके कौन से थे? पंजाब, सिंध और वेस्ट ऑफ इंडस वाला इलाका है, वो सब इलाका उसने जीता था। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जीता तो फिर उसको उस इलाके को कंट्रोल करने, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर तो उन लोगों ने खरोष्टी लिपि को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, जो कि लंबे समय तक चली। और सम्राट अशोक के जितने भी जो स्तंभ और शिलालेख नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि के अंदर ही मिलते हैं। खरोष्टी लिपि अरेबिक लिपि के अकॉर्डिंग, पर्शियन लिपि के अकॉर्डिंग या अरेबिक लिपि के अकॉर्डिंग के हिसाब के जैसे ही वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये सब बातें हमने पता चली ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन चैप्टर नंबर 12 में।